newspaper and a cup of tea. Well, the cup of tea can't be provided, but Lakshya surely here to introduce us to the current news headline. Good morning everyone, I am Lakshya Jain. Today's news headlines are: authorities in Delhi have arrested a suspect linked to the deadly car bombing near the Red Fort that killed 10 people and injured more than 30. Air India will resume direct flights between New Delhi and China starting February 2026 after nearly 6 years of suspension. The NDA, after winning the Bihar election, is holding final discussion to form the new state government. Here are some sports news. South Africa defeated India by 30 runs in the first test at Eden Gardens, Kolkata. India failed to chase down a target of 124, all out for 93. So, to inspire us with the thought of the day, I would like to call Sangam. Good morning everyone. I am Sangam Kumar Sharma from class 7D. Today's thought of the day is: no woman should made to fear that she was not enough. किसी भी महिला को यह डर नहीं सताना चाहिए कि वो पर्याप्त नहीं है. धन्यवाद. Thank you, Sangam. Now Surya will tell us some amazing fun facts. Good morning all of you. My name is Surya Pratap and today's fun facts are: it is impossible to breathe and swallow at the same time. Sharks never stop moving even when they sleep or rest. Sharks can sense a drop of blood from 4 kilometers away. The night vision of tiger is 6 times better than humans. Crocodiles are responsible for over 1,000 deaths per year by the bank of Nile River. Thank you. Thank you, Surya. Women's empowerment is about achieving social, economic, and political inequality and opportunity for women. It includes breaking down stereotypes, ensuring safety, and recognizing that empowering women is crucial for society. Each time a woman stands up for herself, she stands for every woman. We need women at all levels. So, our topic for today is Women's empowerment. बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार करूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया. बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी. पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ. मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ. जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चंद के
every woman's success should be an inspiration to others. Now Suhana will tell us some lines on Nari Shakti. I am Suhana and I want to convey some lines on Nari Shakti. Nari Shakti is not just a concept, it's a force that has shaped our past, present, and will definitely define our future. So let us ensure that every woman has the freedom and right to make her own choice. Thank you.